carved out of subcontinent back in 1947 through great efforts and sacrifices by the Muslims of the subcontinent under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. We have all heard those glorious stories of Pakistan being a great channel, conduit, through which scores of countries exchange goods, cultural traditions, and creative ideas. From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Today, shifting global geopolitical dynamics and the growing dominance of economic priorities have breathed new life into the ancient corridor, transforming it from a relic of the past into a strategic necessity for our bright future. Excellencies, our geography links the warm waters of the Arabian Sea and the Persian Gulf, traversing the majestic Karakoram and Himalayan range and flowing through the timeless Indus Valley. We are at the confluence of China, the Eurasian land bridge, and the Middle East, a unique tri-junction of economic corridors connecting China, Central Asia, and the broader Middle East. Pakistan's long coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports on this coastline, including Karachi, as key transit points on the maritime Silk Road. Honorable delegates, as I speak in this august assembly of our brotherly and friendly delegates, sharing my thoughts with you on this important topic, I am aptly reminded of the vision and foresight of my leader, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif, who staunchly believed that peace and development are intertwined. One of his earliest initiatives after assuming power back in June 2013 was the signing of the China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative. Therefore, CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation, serving as a vital gateway of connectivity, opportunity, and of course, cultural exchanges. Ladies and gentlemen, I take huge pleasure and honor in informing this distinguished audience that after the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting
phase of CPAC 2.0, centered and based on fostering business-to-business partnerships, strengthening investment opportunities for Chinese companies in Pakistan, as well as from friendly and brotherly countries sitting on this round table, so that we can promote our mutual targets in peace and prosperity. Ladies and gentlemen, we are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. And I have already discussed this project with my very dear brother, President Tayyip Erdogan, and my very dear brother, President Masoud Pezeshkian of Turkey and Iran, respectively. And this opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. Also, ladies and gentlemen, enhanced air links to Central Asian countries, along with frameworks such as the TIR Convention and international road transport mechanisms, would really bring a great quantum jump in our trade, our joint venture investments, projects, and of course, people-to-people contacts, which will go a long way in bringing our countries together like never before. Ladies and gentlemen, I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. Excellencies, in today's digital age, connectivity is not just limited to roads, railways, and air links. It is all about data, innovation, research and development, and technological integration. Pakistan is investing in digital infrastructure to ensure that we are adequately equipped to catch up with the fourth industrial revolution around the globe, and having a huge youth bulge in Pakistan. Our demographic situation is a challenge as well as an opportunity in Chinese parlance. 60% of our population spans between 15 years to 30 years. So it's a huge challenge and also brings a huge opportunity. If we are able to provide ample opportunities to our youthful boys and girls in the field of IT, AI, vocational training, that will be our greatest asset. We don't have black gold, but we have our youth as our greatest asset, which will become the harbinger of Pakistan's speedy progress and prosperity in time to come. Ladies and gentlemen, it cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region.
In conclusion, let me mention in all humility, but with fullest certainty at my command, that together we would sow the seed of cooperation so that we may harvest the fruits of development and prosperity for our people and the region beyond. May Allah Almighty give us the guidance and strength to work together very closely and move in unison in future to make this region and regions beyond our borders, which will carry the program of prosperity and progress for all time to come. Thank you very much. God bless us. Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiring words and for your continued support in promoting regional cooperation and connectivity across our shared transport corridors. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we conclude now, there is going to be a group picture to commemorate this successful conference. May I request all ministers and heads of delegations and development partners to please join the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister of Communications for a group picture. All the ministers, heads of delegations and heads of development partners, please join the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahbaz Sharif, and Honorable Minister of Communications, Mr. Abdul Aleem Khan, for a group picture. रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम की तरफ से शरीक मंदुबिन को खुशामदीद कहता हूँ। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए भी अहम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड मनसूबे तक रवाबित का महवर रहा है। बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि ट्रांस अफ़गान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। यकीन है कि बड़े मनसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। आज के डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंज़माम से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की फराहमी तरजीह है। तिजारत और मईशत में ताउन सबके मफाद में है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। हमें आने वाली नस्लों के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने का अज़्म करना है। वज़ीर आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में इख्तितामी नशिस्त से खिताब। उन्होंने हुकूमत और अवाम की तरफ से शरीक मंदुबिन को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया है। नाज़रीन, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उन्होंने इख्तितामी सेशन से खिताब भी किया। खिताब के दौरान उन्होंने तमाम तर उमूर पर और उनकी अहमियत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए भी अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड मनसूबे तक रवाबित का महवर रहा
है। बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मेरी टाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वजीर आज़म ने कहा कि यकीन है कि बड़े मंसूबे खित्ते की इक्तसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं है। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंजमाम से वाबस्ता है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की फ्राहमी तरजीह है। तिजारत और मईशत में ताउन सबके मफाद में है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। हमें आने वाली नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, अज़रबाईजान, बेलारूस के वज़ीर मवासलात ने शिरकत की है। Mr. Sheikh Rashid Alam, CEO, Brand Foundation, Mr. Farooq Alam Hamid, Chairman of IPO Pakistan, Ministry of Commerce, Government of Pakistan, Dr. Talat Shabib, Director, China-Pakistan Studies Center, Qamar Muhammad Dilshad, former Secretary, Election Commission of Pakistan, former Caretaker Minister of Law, Dr. Shaista Lodi, founder of the Aesthetic Clinics in Pakistan. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good morning, distinguished guests, profound business leaders, esteemed members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen. It is both a privilege and a profound pleasure to be back amongst you today at the 16th edition of the Brand of the Year Awards. I am particularly touched to recall that this marks the fourth occasion I have had the honor of presiding over this prestigious ceremony. My previous 3 engagements during my tenure as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan allowed me to witness the nascent growth of our brand ecosystem. Today, as the Chairman of the Senate, I return not just as a guest, but as a witness to your remarkable journey